Good morning, student. Myself Chirag Sukhani from Rothel BBA College Vapi, and I am going to teach you elements of strategic management subject. Now, in this session, we will discuss about the competition analysis. It is very important topic from the examination point of view. Okay, now in earlier session we discussed about the industry analysis. After that you have to study about the competition analysis. और ये जो competition analysis है उसमें एक question जो very important topic है that is जो हम लोग आज चलाने वाले हैं that is forces that shape competition in the industry, or we can say Porter 5 forces model. Okay, so this is a topic that is forces shaping competition. It is also known as Porter 5 forces model. Okay, so exam में आता है, exam में question आता है कि explain the 5 forces model of the competition or explain the forces shaping competition. So very important topic है, तो आपको अच्छे से पढ़ना है. Clear? Now first forces shaping competition. Now we all know that the competition is not manifested. Here manifested is what? Clear. Okay, so competition is not clear only in other players or competitors, but customers, supplier, potential entrant. Now potential entrant is nothing but entry of the new firms. Okay, then substitute products, all are competitor in the sense that they may be more or less prominent or active depending on the nature of the industry, because customers always bargain for lower down the prices. Likewise, supplier also bargain for higher the prices of the inputs. Okay, the new entrant always come up with some new capacity, high desire and so on. Then substitute product also create the threats. So customers, supplier, new entrant, substitute products also affect competitive position directly or indirectly. That is why we can say that competition is not clear only with the other player, or competition is not only clear with the other competitors, but customer, supplier, potential entrant and substitute products all are competitor, because they affect competitive position directly or indirectly. Okay, सो कंपटीशन खाली अदर कंपिटिटर्स के साथ नहीं होता है, बट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कस्टमर्स, सप्लायर, एंट्री ऑफ द न्यू फर्म एज वेल एज द सब्सिट्यूट प्रोडक्ट ऑल्सो अफेक्ट competitive position of the organization. Clear? Now, Professor Michael Porter has identified 5 forces that shape competition in an industry. Which are they? 5 forces, that is threat of entry. Okay, threat of entry. ना आप कोई भी आप लिख सकते हो 1 2 3 4 5. क्लियर? उसके कोई प्रोसेस नहीं कि फर्स्ट वही लिखना है. ओके, सो Professor Michael Porter has identified 5 forces that shape competition in the industry. First is what? Threat of new entrant. Now here threat of new entrant is nothing but entry of the new firm. Then bargaining power of the buyer, then bargaining power of the supplier. Okay, then threat of the substitute products, and then rivalry among existing firms. Okay, so Professor Michael Porter has identified 5 forces that shape competition in the industry. Which are they? First is what? Threat of entry. Okay, second is what? Bargaining power of buyer. Third is bargaining power of supplier. Okay, fourth is threat of substitute product. Okay, and the fifth is what? Rivalry among existing firm. Now each of these we have to explain one by one. Okay, chalo. First, that is threat of entry. Threat तो आपको मीनिंग पता है, एंट्री. ना थ्रेट ऑफ एंट्री का मतलब क्या होता है? जैसे इंडस्ट्री में नई फर्म एंटर होएगी, सो एग्जिस्टिंग फर्म के लिए थ्रेट हो जाएगा. ओके, दिस इज व्हाट फर्स्ट इज व्हाट थ्रेट ऑफ एंट्री. नाउ if the industry is very profitable, then
there will be entry of the new firm in the field, and thus position will become normal like any other industry, because जो भी न्यू फॉर्म है और द न्यू एंट्रेंट है to the industry brings new capacity, then they desire to gain higher market share, and they always bring the substantial resources. However, there are different kind of barrier also for the newcomers in a field. So if this barrier to the entry are high na, then they will not possess any serious threat to the entry. Okay, that means कि अगर कोई भी इंडस्ट्री प्रॉफिटेबल है, ओके नाउ इन टुडेज सिनारियो जो कोरोना सिचुएशन है, ओके सो हम लोग एग्ज्यूम कर सकते हैं कि जो दैट इज़ हाइजीनिक प्रोडक्ट वाला इंडस्ट्री, ओके सो इफ द इंडस्ट्री इज़ वेरी प्रॉफिटेबल, then there will be entry of the many organization in the field. So position कैसा हो जाएगा? The position will become like normal like any other industry, because जो भी new firm है they always bring new capacity, they always desire to gain higher market share, and they bring the higher or substantial resources. Clear? But there are different kind of barrier also for the newcomer in a field. ओके यानी न्यू कमर्स ईजी वे से इंडस्ट्री में एंटर नहीं भी हो पाता है. सो देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ बैरियर ऑल्सो फॉर द न्यू कमर्स इन अ फील्ड. सो इफ दिस बैरियर टू द एंट्री आर हाई, देन इट विल नॉट पोजेस एनी सीरियस थ्रेट टू द एंट्री. ओके यानी जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी इंडस्ट्री में जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो लोग सम बैरियर क्रिएट करेंगे, सो न्यू फर्म वो इंडस्ट्री में एंटर नहीं हो पाएगी. ओके दैट मीन्स इफ दिस बैरियर टू द एंट्री आर हाई ना, इट विल नॉट पोजेस एनी सीरियस थ्रेट टू द एंट्री. ओके सो हियर देर आर 6 सोर्सेस ऑफ बैरियर टू द एंट्री. देर आर 6 सोर्सेस ऑफ बैरियर टू द एंट्री. दैट मीन्स ये 6 सोर्स है जैसे आपकी जो इंडस्ट्री में कोई नई फर्म एंटर नहीं हो पाएगी. सो देर आर 6 सोर्सेस ऑफ बैरियर टू द एंट्री. फर्स्ट इज व्हाट? इकोनॉमीज ऑफ स्केल, देन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, देन कैपिटल रिक्वायरमेंट, देन कॉस्ट डिसएडवांटेज इंडिपेंडेंट ऑफ साइज, देन एक्सेस टू द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, एंड नेक्स्ट इज व्हाट? गवर्नमेंट पॉलिसी. ना वन बाय हम लोग पढ़ते हैं. चल फर्स्ट इज व्हाट? इकोनॉमीज ऑफ स्केल. फर्स्ट इज व्हाट? इकोनॉमीज ऑफ स्केल. नाउ ये टर्म आपने पढ़ लिया है. नाउ व्हाट इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल? इट मीन्स व्हेन अ फर्म प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट ऑन अ लार्ज स्केल, देन कॉस्ट पर यूनिट लो. ओके सो फर्म हैज सर्टन बेनिफिट्स और सर्टन इकोनॉमीज इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, मार्केटिंग, रिसर्च, finance or any other part of the businesses. So economies of scale always prevent entry of the new firms by forcing the newcomers either to come up on a large scale or to accept the cost disadvantage. So economies of scale creates entry barrier for the newcomers. Clear? So what is economies of scale? Economies of scale में क्या होता है कि अगर फर्म लार्ज स्केल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगी, so per unit cost become lower and lower. Okay so ultimately lower cost creates entry barrier for the newcomers. अगर that means अगर newcomers या new firm को इंडस्ट्री में एंटर होना है, so उसका प्रोडक्शन कॉस्ट ऑलवेज क्या होना चाहिए? लोअर होना चाहिए, तो ही उसके साथ compete कर पाएगा. ओके आइदर अगर वो उसको एंटर करेगा इंडस्ट्री में, so they have to bear certain cost disadvantages. Okay so economies of scale can always prevent entry of the new firm in the industry. That is why we can say economies of scale create entry barrier for the newcomers. Clear? Chalo. Next is what? Product differentiation. Now the name itself says product differentiation. Now product differentiation means what? The product which is different from the competitors. Okay so product differentiation act as a powerful entry barrier, because if a firm produce a product which is different from the competitors, then it create high brand loyalty in the mind of the customer. Okay so brand identification
creates barrier by forcing the newcomers to spend heavily to overcome customers loyalty. Okay, so product differentiation act as a entry barrier for the newcomers. Okay, so simple say what is product differentiation? In a product which is much more different as compared to the competitor. Okay, so if the product it is different, it ultimately act as a powerful entry barrier, because if a firm produce a product which is totally different from the competitors, then it will create high brand loyalty in the mind of customer. ओके, सो जो ब्रांड क्रिएट करता है कस्टमर्स के माइंड में, इट अल्टीमेटली बैरियर्स फॉर द न्यू कमर्स, बिकॉज न्यू कमर्स को अगर वो ब्रांड को कम करना है या ब्रांड को क्रिएट करना है, जो ओल्ड ब्रांड है उसको ओवरकम करना है या उसके खुद का ब्रांड क्रिएट करना है, देन दे हैव टू स्पेंड हेविली ऑन वेरियस टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट. ओके, सो उसको प्रमोशनल एक्टिविटीज में ज़्यादा स्पेंड करना पड़ेगा. Clear? That is why product differentiation act as an entry barrier. Product differentiation act as an entry barrier for the newcomers. हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं एट प्रेजेंट के हर्बल इंग्रेडिएंट्स. ओके, हर्बल इंग्रेडिएंट्स का प्रोडक्ट आता है, सो कस्टमर्स के माइंड में एक नाम याद आ जाता है, दैट इज पतंजलि ब्रांड. क्लियर? सो जो पतंजलि है वो कस्टमर्स के माइंड में ब्रांड लॉयल्टी क्रिएट की ब्रांड लॉयल्टी क्रिएट की है. ओके, तो जो नई फॉर्म है अगर उसको इंडस्ट्री में आना है, तो ये जो ब्रांड है ना उसको कैसे कम करना है वो ट्राई करना पड़ेगा. ओके, सो ब्रांड को कम करना है, सो दे हैव टू स्पेंड हेविली ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इन प्रमोशनल एक्टिविटी, एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा. ओके, सो अल्टीमेटली उसको तो ज़्यादा स्पेंड करना पड़ेगा, सो अल्टीमेटली उसके लिए क्या हो जाएगा, एंट्री बैरियर. सो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एक्ट एज ए एंट्री बैरियर फॉर द न्यू कमर्स. या नेक्स्ट इज व्हाट, कैपिटल रिक्वायरमेंट. नाउ इन एन इंडस्ट्री where there is a need to invest large financial resources in order to compete, ultimately create the barrier for the newcomers, because the newcomers are not in a position to invest large financial resources, particularly if the capital requirement is high for the project with long gestation period. Okay, so capital requirement act as an entry barrier for the newcomers. That means कोई भी इंडस्ट्री में एंटर होना है, ओके, सो अगर वो इंडस्ट्री में एंटर होने के लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए, लार्ज अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए इन ऑर्डर टू कम्पीट विद द एग्जिस्टिंग फॉर्म. ओके, सो वो केसेस में वो क्या हो जाएगा, इट एक्ट एज अ एंट्री बैरियर फॉर द न्यू कमर्स, बिकॉज जो न्यू कमर्स है ना आर नॉट इन अ पोजिशन टू इन्वेस्ट लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज. ओके, पर्टिकुलरली इन विच सिचुएशन, जो प्रोजेक्ट में हाई इन्वेस्टमेंट विथ लॉन्ग gestation पीरियड है, यानी इन्वेस्टमेंट भी हाई और उसका जो रिटर्न मिलना है ना वो आफ्टर 10 ईयर्स 15 ईयर्स के बाद भी मिल सकता है, लॉन्ग gestation पीरियड है. सो वो केसेस में अल्टीमेटली एक्ट एज एंट्री बैरियर फॉर द न्यू कमर्स. देन कॉस्ट डिसएडवांटेज इंडिपेंडेंट ऑफ साइज. ना कॉस्ट डिसएडवांटेज हो रहा है, नो मैटर साइज लार्ज स्केल है स्मॉल स्केल वो देखना नहीं है, बट कॉस्ट डिसएडवांटेज है इंडिपेंडेंट ऑफ साइज. हाउ? नाउ जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है मे हैव सर्टन कॉस्ट एडवांटेजेस विच इज नॉट अवेलेबल टू द न्यू कमर्स नो मैटर व्हाट देयर साइजेस आर. ओके, यानी ऑलरेडी फर्म जो इंडस्ट्री में एस्टैब्लिश है उसको सर्टन कॉस्ट एडवांटेज होता है विच इज नॉट अवेलेबल टू द न्यू फर्म. Okay, now these advantages can be in the form of effect of the learning curve, then access to the best raw material sources, then they purchase the asset at a pre-inflation prices. तो ये certain cost advantage है which is available to only existing firm, which is not available to the newcomers. Okay, now out of that जो experience curve है ना, it can work as a powerful entry barrier. So what do you mean by experience curve? Now according to the experience curve concept, unit cost in many manufacturing and service organization decline with experience,
यानी जो ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्री में एस्टैब्लिश है, ओके, सो जितना उसका एक्सपीरियंस रहेगा, तो एक्सपीरियंस का कंसेप्ट क्या बोलता है कि यूनिट कॉस्ट डिक्लाइनिंग हो जाता है विथ एक्सपीरियंस, ओके, सो कॉस्ट डिक्लाइनिंग क्रिएट्स बैरियर टू द एंट्री बिकॉज प्रोडक्शन कॉस्ट इज लो हो जाएगा, सो दे कैन सेल द प्रोडक्ट एट अ लोअर प्राइसेस as compared to the competitors. Okay, so the newcomers are not in a position to sell the product at a lower prices because जो new competitors है with no experience, it always facing higher cost. Okay, so cost disadvantages act as a powerful entry barrier. आया समझ में what is experience curve? यानी जो ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी एस्टैब्लिश है, ना बिकॉज ऑफ देयर एक्सपीरियंस यूनिट कॉस्ट डिक्लाइनिंग हो जाता है, ओके, नाउ यूनिट कॉस्ट डिक्लाइनिंग हो जाता है बिकॉज ऑफ व्हाट, एक्सपीरियंस, ओके, दैट मीन्स जो उसका प्रोडक्शन कॉस्ट है लो हो जाएगा, सो दे कैन सेल द प्रोडक्ट एट अ लोअर प्राइसेस, ओके, सो जो न्यू कमर्स है आर नॉट इन अ पोजिशन टू सेल द प्रोडक्ट एट अ सेम प्राइसेस बिकॉज उसका तो हायर कॉस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट है, okay, so cost disadvantages act as a powerful entry barrier. Likewise, fifth, access to distribution channel. Now जो new entrant है may not have access to the distribution channel which is enjoyed by the established organization, which is enjoyed by the existing organization. Now the new entrant may enjoy all this only at a higher cost, therefore newcomers may not remain competitive. क्लियर? यानी ऐसे एग्जाम्पल हम लोग मारुति सुजुकी का एग्जाम्पल ले सकते हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, जिनका वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, दे कैन एक्सेस द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ओके, ना कोई नई फर्म उसमें एंटर होना चाहेगी, सो उसको क्या करना पड़ेगा, इट स्पेंड ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी in order to establish or in order to establish the distribution channel. Okay, so distribution channel act as a entry barrier for the newcomers. And last is what, government policy. Simple side, the government policy always play the major role as a entry barrier. Okay, because जो government है ना, they always can limit or even foreclose entry to the industry with such control as a licensing policy of the government, which ultimately ban the entry. Okay, so example in banking sector, in insurance sectors, कोई भी new firm को enter होना है, so it require the licensing from the government. Okay, so जो government का policy है ultimately act as an entry barrier for the newcomers, that is licensing arrangement or the licensing requirement. Clear? So these are the 6 sources which prevent the entry of the new firm in the industry. Clear all of you? Okay, so ये first topic complete हुआ, that is threat of entry. Now in next session we will discuss the second forces. Has on में? Okay, bye, take care.